हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडोलॉगिस। आज है 17 फरवरी 2023 और 17 फरवरी से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारे ही क्वेश्चंस को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं सारे क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यानी कि इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स है वो भी आपको बताऊंगी जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो के एंड में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरी वीडियोस आपको टाइम पे मिल सके। आइए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। दादा साहेब फाल्के डेथ एनिवर्सरी इज मार्क्ड ऑन 16th of February. He directed India's first feature film. What is the name of the film? दादा साहेब फाल्के की पुण्यतिथि 16 फरवरी को मनाई जाती है। उन्होंने भारत की पहली फीचर फिल्म को निर्देशन किया था। फिल्म का क्या नाम है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, राजा हरीशचंद्र। Dhundiraj Govind Phalke, also known as Dada Saheb Phalke, is regarded as the father of Indian cinema. He was a producer, director, and screenwriter. He made Raja Harishchandra in 1913, which is considered first Indian feature film. The Indian government has named the award for lifetime contribution to Indian cinema the Dada Saheb Phalke Award in his honor. He passed away on February 16th on 1944. Which country has got world's first operational स्वर्ण ड्रोन सिस्टम? किस देश को दुनिया का पहला पूरी तरह से प्रचलित स्वर्ण ड्रोन सिस्टम मिला है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इंडिया। New space research company has delivered Swan drone to Indian Army in February 2023. It makes the Army the first armed force in the world to operationalize Swan drones. The Swan of 100 drones is capable of hitting targets at least 50 km away in the enemy territory. These drones are capable of carrying bombs of a particular weight and can hit targets like moving armed columns. First, G20 Cultural Working Group met will be held in which country? पहली G20 Cultural Working Group की बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, खजुराहो। खजुराहो कहाँ पे है? एमपी में। G20 Cultural Working Group meeting will be held in Khajuraho from 22nd of February. तो ये जो मीटिंग होने वाली है G20 की वो खजुराहो में होने वाली है कब? 22 फरवरी 2023 में। The first cultural working group meeting will be held in Madhya Pradesh Temples town that is Khajuraho from 22 to 25 फरवरी 2023। ये जो मीटिंग है ये पहली मीटिंग है जो कहाँ होने वाली है? मध्य प्रदेश के टेम्पल टाउन खजुराहो में 22 से 25 फरवरी 2023 को। इस इवेंट की थीम क्या होगी? प्रोटेक्शन एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। This event will also have an exhibition which will be organized at the Maharaja Chhatrashala Convention Center, which will be inaugurated by Union Minister for Cultures, that is G. Krishnan Reddy. The Science Center and the Planetarium is to be built in which city in Rajasthan, according to the Memorandum of Understanding between the National Council of Science Museum, that is NCSM, and the Government of Rajasthan. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कोटा। In Rajasthan, Science Center and Planetarium will be constructed in Kota. It will be one of the best science center and planetariums in the world. An MOU was signed on 15th February 2023 between the National Council of Science Museum, that is NCSM, and the Government of Rajasthan for the construction of the center. There are 24 science center or museums of NCSM located in different states of India. Global Tech Summit, that is GTS, will be held in which city? Global Tech Summit GTS किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विशाखापट्टनम। A two-day Global Tech Summit will be held in Visakhapatnam on February 16. Precisely बात करें तो a two-day program of Global Tech Summit, that is GTS, is going to be held in Visakhapatnam of Andhra Pradesh on February 16 or 17 in 2023. The summit keys area basically focus on include health, technology, food processing,
finance and farmer sector. Nearly 1,000 delegates from more than 25 countries will attend the event to discuss on integrating technology advancement in pharmaceutical curriculum. Union Cabinet approved Village Vibrant program for financial year from 2022 to 2026. How many villages will be taken up in the first phase of the program? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2022 से लेकर 26 के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। कार्यक्रम के पहले चरण में यानी कि फर्स्ट फेज में इन गांवों को कैसे लिया जाएगा, मतलब कितने गांवों को लिया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 663 गांव यानी कि विलेजेस। The Union Cabinet on 15th of February 2023 approved Vibrant Villages program, that is VVP, for the financial year 2022-2023 to 2025 to 2026 with financial, और directly आप बोल सकते हैं from 2022 to 2026 with financial allocations of rupees 4,800 crores. The scheme will provide fund for development of essential infrastructure in 4 states and 1 union territories. कितने states में? 4 states और 1 union territory along with the northern land border of the country. In first phase, total 663 villages will be taken up for the program. विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम देख लेते हैं ये क्या है। इट वाज अनाउंस इन द बजट स्पीच 2022 के बजट स्पीच में इसकी अनाउंसमेंट की गई थी। ये प्रोग्राम जो होता है वो मेनली कवरेज देता है किसको? बॉर्डर विलेज ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैविंग स्पेस पॉपुलेशन, लिमिटेड कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर which often gets left out for the development gains. It should be used by all border guarding forces to encourage tourism in border villages to make them self-reliant and vibrant. Which country was participating along with India in the Tarkash exercise held in Chennai? चेन्नई में आयोजित तर्कश अभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश भाग ले रहा था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यूएसए। The sixth edition of Indo-US exercise, that is Tarkash, concluded in Chennai. कौन सा edition है? Sixth edition. The sixth edition of joint exercise Tarkash held from 16th January to 14th of February, that was concluded in Chennai by the National Security Guard NSG and the US Special Operations Force, that is SOF. Chemicals, biological, radiology, and nuclear, that is CBRN, terror response, has been included in this exercise for the first time. कौन सी एक्सरसाइज को इसमें फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया गया है? CBRN को, that is chemical, biological, radiology, and nuclear terror response. CBRN are classified as weapons of mass destruction, that is WMD, weapons of mass destruction. अब ये होता क्या है, इसको जो इंक्लूड किया गया है इसमें होगा क्या? केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजी एंड न्यूक्लियर CBRN weapons. The most recent use of CBRN was in the form of sarin gas attack that was done in Syria in 2017 that killed over 100 people. Chemical weapons include mustard gas and nerve agents. Biological agents like anthrax, botulinum toxins, and plague are some of the examples of biochemical weapons. Radiology weapons include weaponized radioactive waste and dirty bombs as well as nuclear weapons. Union Cabinet has approved the signing of the Memorandum of Understanding, that is MOU, with which country for cooperation in agriculture and allied sector? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, चिली। The Union Cabinet approved the signing of the Memorandum of Understanding, that is MOU, between India and Chile on 15th February 2023 for cooperation in agriculture and allied sector. The meetings of the Agriculture Working Group will be held once a year alternately in Chile and India. ये जो ग्रुप की जो मीटिंग होने वाली है वो एक बार इंडिया में होगी और अगले साल वो चिली में होगी, ऐसे ऑल्टरनेटली होने वाली है। A Chile India Agriculture Working Group
will be constituted for the implementation of the MOU? Which payment bank is first to introduce the UPI Lite feature? कौन सा पेमेंट बैंक सबसे पहले यूपीआई लाइट फीचर शुरू करने वाला है? इट इज वेरी क्लियर विद द इमेज. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, पेटीएम. Paytm Payments Bank Limited, that is PPBL, in February 2023 has launched UPI Lite feature for multi-small value UPI transaction and became the first payment bank to launch such feature. The UPI Lite feature will help with faster real-time transactions with a single click through Paytm. The NPCI designed the feature, which was launched by Reserve Bank of India (RBI) in September 2022. पेटीएम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. इनके सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा, दिसंबर 2010 से. पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है 197 कम्युनिकेशंस. फाउंडर है विजय शेखर शर्मा, सीईओ फाउंडर सेम है. फाउंडेड कब हुआ था? 2010 में. हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? नोएडा, उत्तर प्रदेश. Which district has won स्वराज ट्रॉफी फॉर द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत? किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी जीती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कोलम. The Kollam district of Panchayat won the Swaraj Trophy for the best district panchayat in Kerala for the year 2021 and 2022. The Kannur district of Panchayat stood second in the ranking. Kannur district जो है उसकी पोजीशन सेकेंड थी और कोलम डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी पोजीशन जो है वो फर्स्ट पोजीशन थी. कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं. Government of Kerala has decided to grant special awards in the name of Swaraj Trophy and Crash Prize to local bodies for outstanding performance in administration, revenue collection, planning, people's participation, distribution of social security pension and so on. ये important question है. इससे एक question आपके लिए पूछा जा सकता है आपके एग्जाम पेपर में. The Constitution, 73rd Amendment Act 1992, that came into force with effect from 24th of April 1993, has institutionalized Panchayati Raj, Panchayat Raj through the village, intermediate and district level panchayats. Union Minister of Chemical and Fertilizers, Dr. Mansukh Mandavia, inaugurated Indian Farmer Fertilizer Corporation Limited (IFFCO) Nano Urea Liquid Plant at Anwala and Phulpur in which state on 14th of February 2023. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज उत्तर प्रदेश. इसका इनॉग्रेशन कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में. Union Minister of Chemical and Fertilizers, Dr. Mansukh Mandavia, inaugurated Indian Farmer Fertilizer Corporation Limited, that is IFFCO, Nano Urea Liquid plants at Anola and Palampur in Uttar Pradesh on 14th of February 2023. The ministers, while highlighting the benefits of nano urea, said it is the best green technology and provides solution to populations, that is to pollution, solution to pollutions. It saves the soil and increases farm productivity. Government's expert committee has given approval to nano DAP and it will also come to replace DAP shortly. Nano DAP will immensely benefit our farmers and it will be available at half the cost of DAP. In February 2023, with which country did India sign an MOU on visa exception for holders of diplomatic and official passports? फरवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ जो है डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीजा छूट पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फिजी. India and Fiji has signed an MOU on visa exception for holders of diplomatic and official passport. Under this agreement, diplomatic and official passport holders will be able to enter, transit, and stay in each other territories without a visa for a period not exceeding 90 days. The MOU will be helpful in encouraging greater travel between both the countries, that is India and Fiji,
The MOU was exchanged in the presence of Prime Minister of Fiji, that is Sitiveni Rabuka, and External Affairs Minister, that is Dr. S. Jaishankar. How many multi-purpose primary agriculture credit society, that is PACS, Dairy and Fisheries Corporation will be established in each undercovered panchayat to strengthen the cooperation movement in the country? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 लाख. For this, initially यानी कि शुरुआती फेज में 2 लाख मल्टीपर्पज Primary Agriculture Credit Society, that is PACS, dairy and fisheries cooperatives will be established in each undercover panchayats. They will be established in the next 5 years. This will enable cooperatives to modernize infrastructure. This will also strengthen the cooperative sector and help in generating employment opportunities kahan in the rural area. Union Cabinet has also approved the centrally sponsored scheme Vibrant Village Program for the financial year 2022-2023 to 2025-2026 with a financial allocation of 4,800 crores rupees. अभी recently में इस टॉपिक पे हमने क्वेश्चन देखा है. It will lead to infrastructure development and livelihood opportunities in 4 states and 1 union territory along with the land border. This will include Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Arunachal Pradesh and Union Territory of Ladakh. अभी मैंने जो इससे पहले क्वेश्चन पूछा था उसमें था ना कि 4 states और 1 union territory को मिलने वाला है. तो 4 states कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और यूनियन टेरिटरी है कहाँ? लद्दाख की. So at the end of the session, there's a question for you. First G20 Culture Working Group meet will be held in which city? पहली G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? इसका जवाब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में देना और उसके साथ ही साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना. बेस्ट ऑफ लक अगर आपके अपकमिंग डेज में कोई से भी पेपर्स हैं और उसके साथ ही साथ हैव अ वंडरफुल डे टुडे. थैंक यू.